Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Sv hybridization. Okay, ji. Let's start Sv hybridization. Okay, ji. First of all, I will define it. What is Sv hybridization? Okay, ji. We can say that it's a type of hybridization into which one S and one P atomic orbital get mixed to form new hybrid orbitals of same shape and same energy. Okay, from this definition there are some keywords that I will underline, so when you learn it you have to focus on these key points. Okay, like that I have underlined here. It's type hybridization, 1s and 1p atomic orbitals get mixed and form hybrid orbitals of same shape and same energy. Okay, as in previous lecture I told you that atomic orbitals that are s, p, d and f has different shapes and different energy. So when they get hybridized, their energy and shape remain same. Okay, so that's why I here in definition point out that type of hybridization into which one s and one p. Its type is specific for two orbitals. Okay, one is 1s orbital and second one is 1p orbital. Okay, these two orbitals get mixed and form new hybrid orbital that have same shape and same energy. This type of hybridization is called sp hybridization. Okay, let's explain it with the help of an example. Here I will narrate example that is the most difficult one example in enter book, that is of Ethyne. Okay, we can write its molecular formula as C2H2. Okay, and its molecular condensed formula will be CH triple bond CH. Okay, you can write its formula in any of this form. Okay, either in molecular form or either in condensed form. Okay, so let's start from this example. As first of all I will write its electronic configuration, that how or in which form they get hybridized. Okay, so from this example I will focus on this type of formula, mean condensed formula. Here there are two carbon. This one is the first carbon. Okay, so first of all I will write its electronic configuration. Okay, so as we know from previous lecture that carbon has 6 atomic number, and in ground state its electronic configuration is like as 1s that has 2 electrons, 2s that also has 2 electron, and then third orbital is 2p, that is 2px, 2py and 2pz. Okay, here as there are 4 electron in first two orbital, then there are only 2 electron that are remaining, that will be in 2px and 2py by Hund's rule or Pauli exclusive principle. Okay, so this is electronic configuration of carbon in its ground phase form. Then I will write its electronic configuration in excited state. Okay, in excited state, as in previous lecture I told you that one electron from 2s jump to 2pz orbital because its energy increase when this carbon goes to chemical bond with these two unpaired electrons of 2px and 2py. Okay, then its electronic configuration will be as 1s
it will has 2 electrons with opposite spin. 2s, no, it has only 1 electron because it's 1 electron jump from 2s to 2pz. Okay, then 2p orbital will be like as 2px, 2py and 2pz. No, it has 3 electron. First one 2px, second one 2pz and third one is in 2pz. Okay, and this one 2pz is that electron that jump from 2s to 2pz, that I write here with different colors so that you can identify that this electron is shifted from 2s to 2pz orbital. Okay, this is electronic configuration of carbon in its excited state. Okay, as we are studying sp hybridization, it's mean here we need 2 atomic orbital that are going to be hybridized. That will be one 2s and second one is 2px, because in definition as I mentioned here we have to take 1s and 2p, and there are this one is a 1s and these are 3p orbital, from which we have to take only 1p orbital, that is 2px. Here is a question most important that are mostly asked by the students, that sir, why electron only jump from 2s to 2pz, why electron not jump from 1s to 2pz? The answer will be that this orbital is belong to k shell, okay, and these other belong to L shell. Okay, so shifting of electron is restricted to its inner in its own shell. Okay, that's why electron jump from this 2 and 1 2s to 2pz, mean inner shell there is a transfer of electron in its own shell. Okay, then we move to next. Okay, when 2 atomic orbital 1s and 1p hybridize, they will be like that. Okay, as they know are hybridized are mixed, so they have 50% s character and 50% p character, and their name will be like s. This will also sp and this will also sp, and both of them has 1 electron in it. Okay, so as these are mixed hybridized, so I name them hybridized orbitals. Okay, so out of 4 orbital, because this one is also we know that only that orbitals going to take part in chemical bonding that are have half filled electron. Half filled mean if they have 1 electron then they will go for chemical bonding or hybridization. Okay, this one as has 2 electrons, it will not take parts in chemical bonding. Okay, so out of 4 atomic orbital that are half filled, 2 atomic orbital get hybridized and the other 2 that are 2py and 2pz. Okay, both of them are unhybridized. Okay, because they do not get mixed. Okay, as they do not get mixed, so they are called unhybridized orbital. Okay, now I will draw their shapes. As we know, when s and p orbital get mixed, their shape will be like that. Okay, so I will draw it in blue so that you can differentiate them. This one is like that and this one is also like that. Okay, both of them has 1 electron and their name is sp orbital and also sp orbital. Okay, whereas these unhybrid orbitals have shape like that. As both are p orbital, first p orbital has like shape. Okay, its name is 2py and it has 1 electron. Okay, and the other one also as p orbital, it also has shape like that and its name is 2pz and it also has 1 electron. Okay, I draw the shapes of both all of these orbital. Out there are total 4 orbital, out of which 2 are hybridized and 2 are unhybridized. Okay, so this is electronic configuration of first carbon in form they takes part in chemical bonding. Okay, so now I move to next element or atom, that is hydrogen. Okay, as there are only 1 hydrogen and its electronic configuration will be like that.
as hydrogen has one atomic number, I write there, and its electronic configuration will be 1s, and 1s contain only one electron. Because it has only one electron, that's why 1s has only one electron. There, whereas in carbon, as carbon has many or 6 electrons, so its first orbital 1s occupy 2 electrons. Okay, and as we know, s has shape like that, it has spherical shape. Okay, and its name is 1s, and it has one electron, and I will draw it like that. Okay, then it's a electronic configuration of left hand side of this molecule, okay, or compound. Now I move to second side, and that is right hand side. As right hand side also has same element, so their electronic configuration will be like that. Okay, will have same electronic configuration. So I here will draw or write only that orbital that are hybridized or unhybridized of carbon and hydrogen which has. Okay, so you can write it carbon 6, okay, as it has two hybrid orbital. These are its hybrid orbital sp, one electron, and their shape is like that. Okay, these are hybrid orbital, so I write their hybrid orbitals. And it has two unhybrid orbital, so it also write as 2py, 2pz, one electron, and it also has one electron. ठीक है जी, and these are unhybridized orbitals. Okay जी, unhybrid or hybrid orbital, and their shape will be like that. 2py has same shape, 2py one electron, okay, and 2pz will also have same shape, and I draw it in another colors. Okay, so these are the orbitals of carbon, second carbon, that is on right side of this compound, and this also has two hybrid orbital and two unhybrid orbital. Okay, so the other element that belong to this second carbon is hydrogen, and its electronic configuration will be like that. Hydrogen, as it has one atomic number, its electronic configuration will be 1s, and 1s has one electron, and s has shape spherical. This one is shape 1s, and we write it here 1s, and it has occupy one electron, so I draw one electron. Okay, so this is all about its electronic configuration of this compound. Okay, now I draw its shape, and its shape will be like that. As I draw here two circles, okay, these circle will represent carbon element. Okay, as in compound there are two carbon elements, so I will draw two circles here, and in circle I have written carbon because both of them are carbon. Okay, so this one is first carbon, that is left hand sided carbon, and this one is second carbon, that is right hand side carbon. Okay, as though both of them, as this one has two hybrid and two unhybrid, first of all I will draw there its hybrid orbital. Okay, so this carbon has two hybrid orbital, so I draw its two hybrid orbital. First one is like that, sp, and it has one electron, and other one is like that, sp, it also has one electron. Okay, so this carbon also has two hybrid orbital. First one sp orbital, one electron, or second one sp orbital, it also has one electron, that will hybridize or overlap with the first atomic orbital of the neighboring carbon atom, and this will be like as that this carbon first sp orbital with overlap sp orbital of carbon second carbon. Okay, and this overlapping will be shown in the shape in this form. Okay, and as there are two orbital, first one is sp and second one is also sp, so I name them sp sp overlapping. Okay, and as these orbital are overlapping head to head, so I name them sigma bond, that there is one sigma bond between hybrid orbitals of both carbons. Okay, now I will overlap second hybrid orbital of first carbon with first orbital of hydrogen.
okay, because this carbon also has a neighboring hydrogen. So its neighboring hydrogen like that, and its atomic orbital is 1s that has spherical shape, so I overlap it like as, or here I overlap it with black color, and that overlapping will be like that, okay, and their electron will be between their common place, and this orbital as is 1s, so I name this that the first one is 1s orbital, second one is sp orbital, so I name them 1s sp overlapping, okay, and as these are overlapping head to head, so I name them sigma bond. Okay, I think you are getting my points. No, I move to second carbon, and its second hybrid orbital will overlap with hydrogen of its neighboring element, and as there is also a hydrogen element in its neighbor, so its hybrid orbital will overlap with 1s orbital of second hydrogen, so that overlapping will be on the other hand side, okay, because two hydrogen are there and two carbon are there. First carbon will overlap with first hydrogen, and second carbon will overlap with second hydrogen, okay, and its orbital is 1s and electron will be there, okay, as there is one s orbital and second sp orbital, so I name them 1s sp overlapping, and as these are overlapping head to head, so I name them as sigma bond. Okay, I think you got my point from here. No, it's all about the hybrid orbitals. No, I move to that orbital that are unhybrid there. Okay, first of all, I draw there 2p y unhybrid orbital, and that will be like s. Okay, same shape I drawn there, okay, and its name is 2py, and it has one electron that will I write there either on the upper lobe, either on the lower lobe, it's on you or you, okay, and second carbon also has one 2py, so that will be like s, 2py, and it's one electron, okay. No, they will overlap like s, side by side, okay, you just combine them with the help of a line, okay, this line will show that both of these orbitals are overlapping side by side, and as these are overlap and this orbital is 2py and this orbital is 2py, so I name them 2py overlapping, okay, and as these are overlapping side by side, so I name them this is a pi bond, okay. First all threes are sigma bond and this one is pi bond, okay. No, it's a turn on 2pz, so 2pz orbital you have to draw like that, okay, like that, okay, and its name is 2pz, and here will be its electron, as second carbon also has 2pz, so here is the necessary thing that you have to be remember that many of students draw this orbital 2pz in opposite direction, so when you draw this 2pz orbital, you have to this in your mind that this will be in that axis, okay, so here this axis will be like that, okay, 2pz, and it has one electron, okay, you got my point that mostly here students got trouble, so you have to be careful here when you draw 2pz orbital, okay. No, this overlapping will be like that, you have to combine these two orbital by another line, okay, that is drawn in green color, okay, from both side like that and from here like that, okay, this line will show that these two are orbitals are going to be overlap, okay, as in their overlapping, first one is 2pz, second one is also 2pz, so I name them 2pz overlapping, and as these are also overlapping side by side, so I name them this bond is also a pi bond, okay. So student, this is all from this shape of ethyne, okay, that will be like that. So there are many questions that are asked in ECAT or MCAT question that how many sigma bonds are there in ethyne and how many pi bonds are there in ethyne. So you can see from there that there are 1, 2 and 3 sigma bonds are there in ethyne, whereas pi bond there are 2 pi bond, first one is there and second one is there, okay. This is another thing that is also a question from ECAT and MCAT, but that
pi bond is restricted to what type of atomic orbital. So you have to learn it and remember it that pi bond is specific to 2pz or 2py. Okay, 2px orbital always going to be form sigma bond because their orientation is such that they always overlap head to head, so they always form a sigma bond. Okay, this is all from student. So here you can overlap it like that first carbon 2py orbital will overlap 2py of second orbital, and 2pz orbital of first carbon will overlap with 2pz of the second orbital. Okay, this is all from the electronic configuration of ethyne, and this is also explaining the sp hybridization. So here you can see that how 1s and 1p orbital are get mixed or overlap and they form hybrid orbital, and how hybrid orbital help us to form the shape of ethyne molecule. And as you can see that there are three bonds. First one is sigma bond and two are pi bond. As there are three bond are there, so you can see here in its shape or molecular form that both of carbon have three bond, out of which one is sigma bond and two are pi bond. It's another question from ECAT that how many bonds are there between carbon of ethyne. You can say that there are three bonds between carbon of ethyne. One is sigma bond and two are pi bonds. Okay, that's all for the foreign student. Now I will move to Pakistani student. So Pakistani students के लिए मैं इसी अपनी इस टॉपिक को दोबारा उर्दू लैंग्वेज में जो वो ट्रांसलेट करूँगा. तो आपके लिए आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके जी, जैसे कि नाम से ही शो है कि ये टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें एक s होता है और एक p ऑर्बिटल जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं क्या जी, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप भी सेम होती है और जिनकी एनर्जी भी सेम होती है. इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड जो है हिस्सा लेंगे, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम किसका नाम देते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं. ओके जी, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक जो एग्जांपल लिया है वो लिया इथाइन की, जिसका फार्मूला है C2H2. ओके, कंडेंस अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखेंगे तो लिखेंगे C2H2, और अगर आप इसको कंडेंस फार्मूले में लिखेंगे तो फिर लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके जी, नो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे. तो हमने क्योंकि यहाँ पे चार एलिमेंट हैं, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन, सबकी हमने सेपरेट जो है वो क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और वो फॉर्म लेके आनी है जिस फॉर्म में ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया. इसमें पहला एलिमेंट कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6. ग्राउंड स्टेट में अगर उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो ये होता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 2p आपको पता है 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ जाता है, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं. और इस तरह एक 2pz जो है वो क्या रह जाता है, वेकेंट रह जाता है. किस में, ग्राउंड फॉर्म स्टेट में इसकी. फिर जैसे कार्बन को हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं, तो फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके कहाँ पे चला जाता है, 2pz में चला जाता है. और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट पूछा करते हैं कि सर ये 2p जो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में गया है वो 2s से क्यों गया, 1s से क्यों नहीं गया. तो वो अगेन कि 1s के शेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये अगले दोनों जो है वो किसको शो कर रहे हैं, l शेल को. तो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर ही जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ठीक है जी. सो जी, नेक्स्ट फिर हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आ जाए. तो क्योंकि हमने एक s और एक p लेना है, और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं जो कि हाफ फील्ड है, और हमें पता है जितने हाफ फील्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वही बॉन्डिंग में क्या कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे हैं. तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, ये हाफ फील्ड है, इन चारों ने बॉन्डिंग में क्या करना है, हिस्सा लेना है. और इन चारों में से हमने 2 ऑर्बिटल जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किसको, sp हाइब्रिडाइजेशन. तो मैंने क्या किया, एक s ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, p ले लिया. तो जब 2 ले लेंगे तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे. किस तरह हाइब्रिड, क्योंकि इनमें s और p दोनों जो है वो क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए हैं, और मिक्स होकर इन्होंने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या कर दिए, फॉर्म कर दिए. और दोनों का नाम रखूंगा मैं sp क्योंकि 50% करेक्टर s का है और 50% किसका है जी, p का. और दोनों की अब शेप जो है वो सेम हो जाएगी, और इस तरह की दोनों की क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, और दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम हो जाएगी. ओके जी. सो मैंने इन ऑर्बिटल की शेप भी बना दी, sp लिख दिया, इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन भी जो थे रिप्रेजेंट कर दिए. ओके जी. नेक्स्ट जी, 2 ऐसे रह गए ऑर्बिटल जो हाइब्रिड नहीं हुए, जो आपस में मिक्स नहीं हुए, और वो कौन कौन से हैं, 2py और 2pz है. और मैंने उन दोनों की शेप बना दी, क्योंकि दोनों p है तो दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी. लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2py वाले को मैंने रेड बॉल पॉइंट से
ड्रॉ कर दिया, जबकि 2pz को मैंने क्या कर दिया, ग्रीन वाली से रिप्रेजेंट कर दी। ओके जी, नेक्स्ट जी, अब कार्बन की तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ओके होगी और उसकी शेप भी मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसके साथ है हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s आता है और 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और s की शेप स्फीरिकल होती है, तो मैंने स्फीरिकल शेप बना के 1s भी लिख दिया और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भी जो वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके जी, अब सेम टू सेम यही चीज़ राइट साइड के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया है कार्बन 6 जो है इसके मैंने हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ड्रॉ भी कर दिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी मैंने उनको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और एक हाइड्रोजन है उसके साथ, हाइड्रोजन भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मैं इसी की क्या बनाऊंगा, शेप बनाऊंगा, ठीक है। शेप के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि 2 कार्बन है वहाँ पे, तो दोनों कार्बन को मैंने सर्कल पहले बनाया ब्लैक पॉइंट से और उनके अंदर मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया और लिख दिया, मैं शो कर दिया कि 2 कार्बन है। अब जी सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों कार्बन, इसके पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हाइब्रिड है, तो मैंने इसका पहला हाइब्रिड दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों sp हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा कार्बन उसके पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, फर्स्ट वन सेकंड वन, एक इलेक्ट्रॉन था एक। अब होगा क्या कि इसका फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा, जो कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से ओवरलैप शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ओवरलैप करेगा इलेक्ट्रॉन दोनों की कॉमन प्लेस में आ जाएंगे और इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ पे इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अब इस ओवरलैपिंग में क्योंकि इसका भी s ऑर्बिटल है, इसका भी s है, इसलिए मैं नाम दूंगा sp ओवरलैपिंग का, और क्योंकि हेड टू हेड मिल रहे हैं इसलिए मैं इसको किसका नाम दे दूंगा, सिग्मा बांड का नाम दे दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट जी, अब दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन का, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो ये देखें, इस कार्बन के लिए ये यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर दिया, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था कार्बन का और हाइड्रोजन का जो था वो स्फीरिकल था, वो मैंने ब्लैक से बना दिया, ठीक है। अब दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन प्लेस में आ जाएंगे और ओवरलैप कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का 1s है, कार्बन का sp है, तो मैं नाम दूंगा 1s sp ओवरलैपिंग का, और क्योंकि हेड टू हेड है इसलिए इसका बांड भी कौन सा होगा, सिग्मा बांड हो जाएगा। ओके जी, सेम एज सेकंड कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसके दरमियान भी सेम टू सेम यही क्या कर जाएगा, बांड बन जाएगा, जो यहाँ पे वही वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। ओके जी, अब आता है किन की जी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो थे, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, अनहाइब्रिड शो किया कौन सा, 2py को मैंने यहाँ पे रेड बॉल पॉइंट से ड्रॉ किया, जो मैंने इस एक्सिस में मैंने लगा दिया। ओके जी, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी, आप जहाँ पे आपकी वेल है वहाँ पे आप इसको क्या कर दें, मेंशन कर दें। ओके, जैसे मैंने बनाया, आप क्या करेंगे, ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे। तो मैंने साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को एक लाइन से सिंपल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो ये रिप्रेजेंट कर देगा, ऊपर से भी मैंने उसको मिलाना है और नीचे को मिलाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अबव साइड पे भी हो सकते हैं और बिलो पे भी हो सकते हैं। ओके जी, जैसे ओवरलैप कर गया, इसका 2py है, इसका भी 2py है, मैंने इसलिए नाम दे दिया 2py ओवरलैपिंग, और क्योंकि साइड बाय साइड मिल रहे हैं इसलिए कौन सी बाइंडिंग होगी, पाई बांड हो जाएगा। ओके जी, देन मैंने 2pz वाले का ड्रा किया। 2pz के लिए मैंने जैसे बताया कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको ड्रा करते टाइम कन्फ्यूजन काज करते हैं, तो वो क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर आपने इसको इस रुख में बनाया है पहले वाले कार्बन के 2pz को, तो सेकंड वाले को भी आपने इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, ड्रा कर देना है। तो मैंने ड्रॉ कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए, उनके नाम लिख दिए। अब जब नाम लिख दिया तो मैंने क्या किया, इन दोनों ऑर्बिटल को भी ओवरलैप करवाना है और उस ओवरलैपिंग को भी मैंने किससे शो कर दिया, लाइन से मिला दिया। वो लाइन का मिलना शो कर रहा है कि इनके दरमियान क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। जैसे ओवरलैपिंग हुई, इसका भी क्या है, 2pz है, इसका भी 2pz है, तो इसको मैं नाम दूंगा 2pz ओवरलैपिंग का, और क्योंकि ये भी साइड बाय साइड मिल रहे हैं इसलिए ये वाला बांड कौन सा होगा, पाई बांड हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपने नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ओवरलैपिंग की है तो इलेक्ट्रॉन आपने कॉमन प्लेस पे ले, यहाँ पे क्यों नहीं लेके आए, तो ये मिलाएं तो ये भी कॉमन हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो फिर शेप ज़रा थोड़ी टफ हो जाती है। आप इस तरह भी ड्रा करें तो आप जो चेकर है या चेक करने वाला है वो आपकी बात समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ओके जी, फिर जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है एमडी कैट के, ई कैट के कितने सिग्मा बांड बनते हैं इथाइन में, कितने पाई बांड बनते हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 सिग्मा बांड है और 1 और 2 दो क्या हैं जी, पाई बांड यहाँ पे बांड। इनको नहीं आपने काउंट, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे कहीं पे भी ये बांड हो सकते हैं, तो 2 पाई और 3 कौन से हैं, सिग्मा बांड बन गया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है जी कि 2 कार्बन के दरमियान कितने बांड बने, तो 2 कार्बन के दरमियान 3 बांड बने, पहले वाला सिग्मा, दूसरे वाले 2 पाई, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है, इनको आपने यहाँ पे काउंट नहीं करना, ये भी क्वेश्चन आ सकते, तो क्योंकि 3 है तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिए, 3 ऑर्बिटल जो वो सॉरी बांड जो मैंने क्या कर दिए, शो कर दिया। तो ये था इसके रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले या जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह, ये सब कुछ था आज के लेक्चर से। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।